अच्छा, टेल मी वन थिंग, डज इन अ रिलेशनशिप बॉडी काउंट मैटर्स? आजकल ना ये बहुत ट्रेंड चल रहा है. Yes, it does. Explain me. It's past. When someone meets you, it's a past. Okay, when I'm not saying that you cannot date someone or you cannot be physically intimate with someone. I'm talking, when I say body count, I'm only talking about a number. Is it a high or a low number? What is number acceptable by you? Acceptable 10. 10 is a high number. Yeah. It's a very high number. Yeah. So that's what I mean. That's maximum. I mean, 10 से ज़्यादा. Okay, body count. Sorry. तुम Body एक मिनट कहाँ जा रहे हो तुम? Okay, I thought that how many people have you just like fell in love with? It can Body count. Yeah. मतलब I understand. sexual intimacy. I just went somewhere else. Okay, a body count. I think I don't want to put a number, but yeah, I would be happy if it's like less than. Okay. इमोशनली बॉन्डेड बंदा अगर किसी के साथ हो, फॉर एग्जाम्पल लाइफ में अपने इमोशनली कितने लोगों से इंटीमेट हुए हो, आई थिंक 3 इज़ इनफ. मोर देन 3 इज़ जस्ट टू मच फॉर मी. बट विल दिस बी अ डील ब्रेकर? आई डोंट थिंक सो. देर आर अदर थिंग्स विच विल बी डील ब्रेकर्स फॉर मी. व्हेन आई टॉक अबाउट बॉडी काउंट, डेफिनेटली हाई बॉडी काउंट मैटर्स यार. उसका मतलब ना ये होता है लड़के या लड़की के साथ के आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप वल्नरेबल हो, अंदर से फिजिकली वल्नरेबल हो, आपको वैलिडेशन चाहिए. बहुत बार ना पीपल लैक कॉन्फिडेंस इन इंटिमेसी. व्हेन आई से इंटिमेसी, दे लैक कॉन्फिडेंस इन फिजिकल इंटिमेसी. दैट्स व्हाई दे choose multiple partners over the span of period just to validate themselves they are good. So ये सारे आपका कैरेक्टर बता रहा है. I wanted you to say that ये word. कैरेक्टर आपका बता रहा है, you know, and these things, it's not about sleeping around. I'm not shaming you for that. Of course, go No, on. It's your I'm life. shaming. I want to be very blunt in saying this. तुम्हारी जर्नी अभी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक दिखाती है कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या था. Exactly. अगर तुम्हारा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैरेक्टर ऐसा रहा है कि जिस पे क्वेश्चन उठ सकता है, इट मीन्स तुम्हारा कैरेक्टर बहुत फ्रेजाइल है. Yeah. तो तुम अपने कैरेक्टर को बना के चलो. It's not a privilege कि I have a high body count. It's a shame Yeah. that you have a high body And it count. speaks volumes about what your traumas are, how your childhood was, and I don't want to go there because I feel every home is a happy home, but I do understand this comes a lot from seeking validation outside, you know, how you treat women, what do you consider women? Do you consider them as objects? You consider them as living beings, flesh, what is it? So it speaks volumes. Same goes for women as well. I mean, women are so superior. No matter what patriarchy, no matter what times we live in, women will always have an upper hand. You believe it or not. I don't know why women are choosing this route. अगर आपको बैठे बैठे एक बंदा आपकी केयर करने के लिए रेडी है, आप क्यों, why do you have to go that far? For example, if I tell you, Nikhil, I'm going to invest 10 crores in your company, in your podcast today, for example. Will you go out in the street and ask for more money? No. And that to 10,000 rupees? I'll be stupid doing that. Exactly. I don't know why women are doing that. You don't require it. एक होता है, for example, if men would go ahead do that, I still understand, you know, they want validation. Women are born with beauty. Women are born with everything. And physical intimacy क्या है? Everyone has the same stuff. Men would. Is there anything different that you अगर find? कोई लड़का इस टाइम पे पॉडकास्ट को देख रहा है, they would hate me if I do not defend it for men. ठीक है. So एक चीज़ है, why women have this privileges because दो चीज़ें हैं. एक तो मैं बहुत स्टूपिड चीज़ बोलूँगा और एक मैं बहुत फैक्टफुल चीज़ बोलूँगा. फैक्टफुल चीज़ ये है क्योंकि हमारे पास नंबर कम है, एंड दैट इज़ द रीज़न. एक इंसान अपने आप को फुलफिल करने के लिए एक औरत को देखता है, तो उसके लिए एक लड़की के पास ना 5-6 लड़कों के ऑप्शन होते हैं. द मोमेंट अ गर्ल डम्प्स अ गाय, सेकेंड कंधा या फिर वो अवेलेबल होता है. मानो या ना मानो, वुड यू एग्री टू इट? यस. और लड़के लाइन में लगे हैं, जस्ट से यस. सिमिलर लड़कों के साथ नहीं है ये. हमारे पास यही है. और एक मूवी आई थी प्यार का पंचनामा, उसने कहा था लड़कों में यूनिटी नहीं है साला. मैंने कहा यार ये बात क्या बकवास कर रहा है. ही सेड दैट अगर एक लड़की ने डम किया ना, सारा मर्द जात उस लड़की को 2 साल तक डेट मत करो. तो देयर शुड बी यूनिटी, लेकिन दिस इज रबिश. तो वो तो एक रबिश बात है. I know. हाँ.
क्योंकि See, let's be realistic. I think ये ना man versus woman नहीं है. It's about a right person versus a wrong person. It's all about what your ideals are. हम ना बहुत सारी चीज़ों को आज compromise कर चुके हैं. For example, feminism, liberty के नाम पे आज क्या हो रहा है? Women who smokes, drinks, parties. That's all about feminism. Have you seen anybody who's promoting women climbing up the corporate ladder? Aiming to actually earn 1 crore rupees, and it's doable. It's very much doable. In fact, they have lots of scope there. नहीं करना चाह रहे हैं, क्यों? प्राची, corporate world में why women are not on the higher tier? There are very less women on the higher tier. Why? Okay. Genuinely बताना. Speaking of experience, it's crucial. बहुत सारे आपको ना ऐसे decisions लेने पड़ते हैं जो आपके normal life में जो आप एक इंसान हो ना उससे against है. जैसे कि okay, men have been taking difficult decisions, and they don't fear too much about the consequence, whether they are in the right books or not in the right books, and they're okay with it. Women are not. Women are, we want to please everyone. If not people pleasing, I would say we don't want to offend even one person. तभी आप देखोगे अगर आप, if there is a mother in the house, she will make sure that everyone is peaceful in the family. अपने घर के family, अपने husband के side के family members, she will find ways to keep the peace among everyone. Corporate में ऐसे नहीं चलता. If you are at a higher position. दूसरी चीज़ होती है, half of the time, I think the main reason is half of the time when it's time for women to graduate, when it's time for women to move up the ladder, they get married, they start dating, or they have kids. तो उनकी priorities change हो जाती हैं. Third reason is women don't dream enough that it's achievable, and they don't see themselves there. I have not seen, for example, I have interviewed so many people, mostly women, and whenever I ask them what are your goals in your life, all they say is, okay, I want to be a manager. That's it. That's their goal in their life.